Viewers, I'm Yasir Ali in front of you, and today the thing which I have brought in this class, in today's tutorial, that will be once again type 2 or would conditional. In the previous class we discussed type 2 conditional with its basic information, in which I guided you people about the usage, subjunctive case, about the hypothesis verb, hypothetical and indicative positions. Today we are going to use the same, type 2 conditional or would conditional for status. So let's come, we'll have to have some discussion about that. So the topic is type 2 or would conditional. Can anybody tell me where do we use type 2 or would conditional? Yesterday in the previous class we discussed it in detail. So anybody, where do we use second conditional? The second conditional or type 2 conditional is used for unreal cases. Here the speaker talks or speaks against the present fix, whatever is indicative, reality. The speaker talks against the reality. For example, yesterday we were talking about actions. If you studied, you would not face such crisis. अगर तुम पढ़ते तो ऐसे मसाइल का सामना या बहरान का सामना न करते. Reality क्या थी? You do not study. If you played cricket carefully, our team would not lose the match. अगर तुम एहतियात से क्रिकेट खेलते तो हमारी टीम मैच ना हारती. But problem is that nowadays you are not playing cricket carefully. आज चलते हैं बेटे फंक्शन की तरफ. The second function will be for status. आपको याद था yesterday a brief introduction I gave, and I told you for action we use second form of the verb, but for status with every name we will be using were. क्या use करेंगे? Were. We'll have to go through the simple formula, and the simple formula will be if plus subject plus with every name were. ये कौन सा verb होगा? Yesterday I taught you one verb, hypothesis verb. कौन सा verb? Hypothesis verb, फेले कयास जिसे कहते हैं. अच्छा, A or N, if you want to mention singular names, adjective can be mentioned if you would like to mention, then noun, and then comma, then full subject, then word, then base form of the verb, and then object, and then full stop. Now let me make a sentence. Now you are aware of the fact that the places can be changed. दोनों classes की जगह को हम change कर सकते हैं. For example, मैं कहता हूँ if I were a good singer, if I were a good singer, comma, I would sing songs. अब ये वो बंदा है, पहले तो हम देख लेते हैं. This is which class? If this is your subject, कौन सा verb है? Hypothesis verb. We used, what is this? An N. Articles, indefinite articles. Adjective क्या है? Good. And what is your noun? Singer. Which clause is this? This is your main or result clause. अच्छा जी. What is subject? I. What is verb? This is that. Sing. Base form. Songs. This is your object. तर्जुमा तो ये बनता है, अगर मैं एक अच्छा
गाने वाला होता तो मैं गाने गाता। इसका मतलब ही इज डे ड्रीमिंग। हो सकता है कि अगर ये कोशिश करे तो इसमें तो तब्दीली के कुछ चांसेस हैं। इन रियलिटी, व्हाट इज रियलिटी अमीर हमजा? इज ही अ गुड सिंगर और अ बैड सिंगर? ही इज नॉट अ गुड सिंगर। अंडरस्टूड मुस्तफा? ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अगेंस्ट द रियलिटी, द प्रेजेंट रियलिटी। एक जुमला कोई और बनाकर दिखाए। एनीबडी वुड लाइक टू मेक वन सेंटेंस इन विच यू आर सपोज टू ब्रिंग योर मेन क्लास एट द वेरी बिगनिंग। जी बशारत, वुड यू लाइक टू मेक वन सेंटेंस? दे वुड डिफीट देम। वो उन्हें शिकस्त देते। ऑन व्हाट कंडीशन? इफ, हाँ जी, if they were united. If they were united. So just say, I brought main class at the beginning and I changed the places. Which clause is this? If clause, introduced by if. This is your if clause. And what is hypothesis verb? Were. क्या तर्जुमा बनेगा भाई? अगर वो मुत्तहिद होते तो वो उन्हें शिकस्त देते। चलो जी, रियलिटी क्या है? इन रियलिटी, हाँ जी, व्हाट इज रियलिटी अनीसा? हाँ जी, इन रियलिटी they are not united. जी, if she were a good beautician, she would not destroy your personality like that. अगर वो एक अच्छी ब्यूटिशियन होती तो तुम्हारा ये हाल ना करती। तो रियलिटी क्या है? She is not a good beautician. Okay, if you were a good driver, you would not face maximum accidents. अगर तुम एक अच्छे ड्राइवर होते तुम इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स ना करते। रियलिटी क्या है? यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर। जी, कुछ जुमले आपकी तरफ से भी होने चाहिए। आई वॉन्ट यू टू बी पार्टिसिपेटिंग। जी बेटे, हाँ जी, हाँ जी, जी बोलो। वेरी नाइस। इफ दे वर गुड इन स्टडीज दे वुड वर्क हार्ड। ओके, हाफिज साहब। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। आपने स्टेटस में रहना और वर्ड से ही जुमले बनेंगे। आगे लाऊंगा आपको। मैं उर्दू बोलूं, इंग्लिश में चेंज कर सकते हो? जी, अगर मैं शाहरुख खान होता तो मैं बहुत सारी फिल्में बनाता। आई वुड मेक सो मेनी मूवीज। व्हाट इज रियलिटी? आई एम नॉट शाहरुख खान। जी, अगर मैं एक अमीर खातून होती तो मैं बहुत बड़ा बंगला बनाती। would make a big bungalow. What is reality? I'm not a rich lady. I'm a poor lady. Okay, जी बेटे। अगर मैं एक अच्छी राइटर होती तो मैं बहुत सारी पोएम्स लिखती। I would write so many poems. Okay, okay, ठीक है। अगर हम अच्छे तालिब इल्म होते तो हम अपने असाज़े कराम को शर्मिंदा न करते। If we were good students, we would not let down our teachers या disappoint our teachers. यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? बात समझ आ गई? एक और जगहों की भी बात हो सकती है। If कोयटा were a beautiful place, I would live for more time. अगर कोयटा एक अच्छी जगह होती तो मैं और ज़्यादा वक्त के लिए यहाँ रहता। बट हमारे लिए तो कोयटा अच्छा ही है, लेकिन जुमले के हिसाब से हो सकता है कि कोयटा इज़ नॉट अ गुड place. Okay, so what I feel, that's enough for today up to this place. Inshallah, in my next tutorial I will definitely bring the next usage of would conditional, type 2 conditional. Till that time, thank you very much. Keep on watching my lectures, subscribe to my channel, like my videos. Inshallah, I will keep on bringing such informative videos for you people.